Namaste, everybody. Good morning. Here we are together. I can't see anybody, but I hope you can see me. I'm happy to be here with you on this third day of our time together. I hope you've been enjoying our time. We'll go deeper today. Good morning, ma'am. Good morning. I can hear you, but I can't see you. Morning, madam. Good morning, ma'am. Very good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Namaste. Good morning, Atma Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good Good morning. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. There are some new participants who have joined today. It will be great if you can initiate them. Happy morning. Very kind of you. If you can. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Did you sleep well and have dreams of Tara? We are on our third day, and I am happy to welcome new people here. So it's always a pleasure to have interested people joining, as well as the regulars. So welcome, everybody. Sweety, do you want to translate that? Yes, good morning. Welcome you all. सभी नई participants along with the regular participants को welcome किया जाता है और आज हम और डिटेल में सीखेंगे about the practices and the teachings जो 2 दिन से सीखे हैं. Good morning, Sweety ma'am. Good morning. Atmavandan. Good morning, Sweety. Good morning, Sweety. Good morning, Sweety D. Good morning, Sweety. Sweety Devi. Good morning, Atma Vandan. Okay, so thank you. It's great to hear your voices. I think now it's good if we all mute so people can focus. And what I would like to do today is begin by hearing from you about how your experience with Tara has been. We did the journey with Tara. We did her sadhana 2 times already. And how has that been for you? Did Tara give you a special gift yesterday during the journey? Did she take you to a special place? I'd love to hear from you for a little while. We'll share together. अभी हम आपके एक्सपीरियंस से शुरुआत करेंगे. We'll do the sharing. हम शेयरिंग करेंगे कि आपने कैसा महसूस किया है. कल हमने देवी तारा के साथ यात्रा की थी, साथ ही साधना किया था 2 बार. क्या देवी तारा ने आपको कोई उपहार दिया है? कौन सी जगह पे ले गई थी? तो इस बारे में हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे. And then after sharing, we'll do the sadhana again. That'll be our 3rd time. But for the new people, it will be your first time, and that will be your initiation into the practice. आज ये शेयरिंग करने के बाद हम साधना का प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे लिए वो 3rd प्रैक्टिस होएगा. लेकिन जो न्यू पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए फर्स्ट प्रैक्टिस होएगा एंड वही इनिशिएशन प्रोसेस हो जाएगा. After that, we'll do a journey again, because I think that Tara has more wisdom to share with us in our journey. साधना प्रैक्टिस के बाद हम देवी तारा की यात्रा फिर से करेंगे और शायद हमें और ज्ञान मिल जाए और एक्सपीरियंसेस मिल जाए उनके साथ. And then I'll have time for questions, and then we'll end with some singing of her mantra together. जैसे हम देवी तारा की यात्रा को समाप्त करेंगे, बाद में हम सवाल जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे
वो करेंगे और उसके बाद कुछ मंत्र चैंट करेंगे, सॉन्ग्स गाएंगे रिलेटेड टू देवी तारा. I'm getting a lot of chats asking if we can do the practice now. It is your morning time. Maybe that feels like a better. Yes, 5 ma'am. a.m. in India. 5 a.m. 5 Yes. a.m. Okay. We prefer to have practice. Yes. Thank you. I'm glad you said that. For me, it's 4:30 in the afternoon. I've been awake for many hours, but for you, it's not so easy to talk yet. Okay, good idea. So Tara is swift like the wind, ever changing. You know, the wind is always changing. So if we want to be like Tara, we can be flexible like the wind, changing, easy, no problem, like the wind, right? देवी तारा पवन तत्व से जुड़ी हुई है, हवा की तरह तेज है और स्थिर नहीं है, तो हमें भी वैसे ही फ्लेक्सिबल होना है. So let's enter into our meditation practice then. अभी हम साधना मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. For the people who are new, please follow along as best as you can. It might not be, it might feel very new to you. That's okay. You will have the documents and also the videos for your support after the class. जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस होएगा, तो रिलैक्स हो जाइए. जस्ट जितना हो सके उतने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए. बाद में आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियोस शेयर किए जाएंगे. Okay. So take a comfortable cross-legged position. अपने सुविधा के अनुसार कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए. आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या लेग्स को क्रॉस कर सकते हैं या चेयर पे भी बैठ सकते हैं. हम सब पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए ताकि साधना के टाइम कोई डिस्टरबेंस ना हो. Okay, you can sit on the floor, on a cushion, on the couch, on your bed, wherever is comfortable for you. Okay. So allow the eyes to close and take some deep breaths. आंखें बंद कीजिए और Feel your spine tall. अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को महसूस कीजिए. The shoulders relaxed. सीधी पीठ के साथ हमारे जो शोल्डर्स है उनको रिलैक्स कीजिए. Your hands are relaxed on the thighs. हाथों को अपनी जांघों पे रिलैक्स कीजिए, थाइस पे रख दीजिए. The tip of your tongue is resting at the upper palate, right at the root of the front teeth. Gentle. Sweetie, just tell them to gently put their tongue just right there. टंग है वो ऊपर के पैलेट की वहां पे रख दीजिए जेंटली. And let the stomach, the belly relax with the breath. अपने पेट को अपने सांसों के साथ रिलैक्स कीजिए. Feeling the central channel, this color of the sky, blue, beginning at the base of the spine, traveling up to the crown of the head, where it blooms like a lotus flower, 1,000-petaled lotus, the Sahasrara. साथ ही महसूस कीजिए सेंट्रल चैनल को
जो रीढ़ की हड्डी के साथ पैरेलली ऊपर की ओर रन कर रहा है, और क्राउन चक्र में 1000 लोटस पेटल्स के रूप में वो टर्मिनेट होता है। And feel the 2 side channels, leaving the central channel just below the navel, traveling up parallel to the central channel, and then terminating at the 2 nostrils. अभी 2 साइड चैनल्स को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि अपने बेली बटन की 4 उंगली से का मेजर लेके और छोड़ के 6 अक्षर लेटर से 2 साइड नॉस्ट्रिल्स लेफ्ट एंड राइट वो पैरेलली ऊपर की ओर रन होती है, पैरेलल टू द सेंट्रल चैनल, क्राउन चक्र से पास होके वो दोनों नासिका, दोनों नॉस्ट्रिल्स में टर्मिनेट होती है। The right channel is a deep red color and the left channel is a clear white color. जो राइट चैनल है उसका रंग है गहरा लाल, और जो लेफ्ट चैनल है उसका कलर है, रंग है सफेद। When out of balance, the central channel represents the affliction or the emotion of ignorance. जब हमारा सेंट्रल चैनल में इम्बैलेंस हो जाती है, यानी असंतुलन हो जाता है, तो उसमें अज्ञान के टॉक्सिन्स भर जाते हैं। The right red channel represents the emotion of clinging, desire. जो हमारा राइट चैनल है, जो गहरा लाल कलर का है, वो प्रतीक है क्रेविंग्स का, लालसा का, इच्छा का। The left channel represents white and it represents the afflictive or the emotion of hatred or anger when out of balance. जो लेफ्ट चैनल है, जब उसमें असंतुलन होता है, जब इम्बैलेंस होता है, जो सफेद रंग है उसका प्रतीक है क्रोध, आक्रमकता और घृणा। The right is raga, the left is dvesha. Raga, dvesha. Craving, hatred on either side. Yes. जो राइट साइड है उसमें लालसा, इच्छा और लोभ की रिहाई का प्रतीक है। जो लेफ्ट साइड है, जो सफेद रंग का है, वो क्रोध, आक्रमकता, घृणा, ये सब इमोशंस की रिहाई का प्रतीक है। So with the 9 purification breaths, we're going to purify those negative emotions. अभी हम 9 सांसों का जो प्रैक्टिस करेंगे, ये सब इमोशंस को एमिट करने के लिए हम ट्राई करेंगे। So when you're ready, inhale. Let's inhale together. Raise the arms overhead, and then exhale, Vajra fists. सांस को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। एक्सहेल करते समय सांस हाथों को नीचे लीजिए। वज्रा फिस्ट बनाए, यानी नरम मुट्ठी बनाए। अपने अंगूठों को रिंग फिंगर के नीचे रख दीजिए और ऐसा सॉफ्ट फिस्ट बनाए और अपनी जांघों पे दोनों हाथों को रख दीजिए। Inhale the left arm out to the side. Bend the elbow, circle once, place, breathe out through the right nostril, cleansing the right channel. लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाए। इंडेक्स फिंगर जो है लेफ्ट हैंड की, उसको गोल आकार में घुमाते हुए अपनी लेफ्ट नासिका पे रख दे। राइट नासिका से एक्सहेल करे। जो डीप रेड कलर विजुअलाइज करना है, और अपने हाथों को फिर से अपने थाइस पे, जांघों पे रख दीजिए। And the other side. The right arm comes up, inhale. One circle with the wrist, place, exhale through the left, smoky white. अभी हम राइट हैंड को ऊपर लेंगे। इंडेक्स, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को गोल आकार में घुमाते हुए हमारी राइट नासिका के ऊपर रख दे, और
लेफ्ट नासिका से सांस को बाहर ले, सफेद रंग महसूस करना है और अपने राइट हैंड को वापस अपनी जांघों पे रख दे। Now we'll speed it up a little bit. We'll do 2 more times with not so much talking. Just follow my movements. अभी हम 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन स्पीड में करेंगे। तो अभी खाली देवी टीचर चंद्र ईस्टन इंस्ट्रक्शंस देगी, उनको फॉलो करेंगे। Okay, inhale the left. Exhale. Release. Inhale the right. Exhale through the left. Release. Again. Inhale through the left. Exhale through the right nostril. Release. Inhale the right arm. Exhale, left nostril. Release. Now, inhale, big breath. अभी गहरी सांस लीजिए। 3-part exhalation, so it's in 3 parts. A little exhale, another, and the 3rd part completely empty. We'll do it again. You can explain. अभी हम जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो 3 भागों में छोड़ना है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में पूरी तरह से एक्सहेलेशन करना है। Inhale. सांस को अंदर लीजिए। 3-part exhalation, cleansing the central channel. सांस को 3 भागों में छोड़ते हुए 1, 2, 3 और सेंट्रल चैनल को हमको क्लीन करना है। Let's try one more time, just for practice. Usually we only do it once. हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। Inhale. Exhale. The last exhalation is a little push with the navel. All the air leaves the lungs. जो लास्ट एक्सहेलेशन है, 3rd पार्ट है, वो हल्का सा हमें धक्का देना, हमें डायफ्राम को, लेकिन अपने आवश्यकता अनुसार। Then release the hands, palms down on the thighs, and rest in what's called the wisdom prana, the balanced prana after your breathing exercise. अभी ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होने के बाद दोनों हाथों को अपने थाइस पे आरामदेह पोजीशन पे रख दीजिए। इसे ज्ञानोदय पोजीशन ही बोलते हैं। And now we'll do the Tata Sadhna. I've asked Sweety to share her screen with the Hindi translation. If you would like to follow along with the text, you can, but you don't have to. If you want to keep the eyes closed, you can keep them closed. Let's show the picture first, Sweety. Let's show the top. Yes. Yeah, there she is. Maybe, can you translate that? Yes. अभी हम साधना का प्रैक्टिस करेंगे। अपनी आंखें बंद रख सकते हैं, या अगर खुली रख रहे हैं तो आप पीडीएफ के जो नोट्स है सामने स्क्रीन पे, उनको भी रेफर कर सकते हैं। Let your eyes gently meditate on her form, her gaze, her face, her body, her dharma chakra,
on her lotus flower. देवी तारा के विवरण को नोटिस कीजिए, उनके आंखों को, उनकी मुद्रा को, उनके हाथों को, उनके हाथों में जो लोटस फ्ला है उनको, और लोटस फ्ला के ऊपर जो धर्म अष्टमुखी धर्म चक्र है उनके रंग को, तो उनके कंप्लीट डिटेल्स को नोटिस कीजिए. You can see her left hand is in the 3-jewel mudra at her heart. उनका जो लेफ्ट हैंड है उनके हृदय चक्र के पास 3 रत्न मुद्रा में है. 3 रत्न मुद्रा बनाने के लिए अपने अंगूठे और अपने रिंग फिंगर को जोड़ दीजिए और हृदय चक्र के पास रखिए. And then her right hand is palm open on her knee. उनका जो राइट हैंड है वो उनके राइट नीज पे रखा हुआ है, घुटनों पे, और उनकी हथेली खुली हुई है ऊपर की ओर. This is the mudra of supreme generosity. ये जो हथेली खुली हुई है उनके राइट हैंड की जो राइट घुटने पे है वो एक सुप्रीम जेनरोसिटी का प्रतीक है इस मुद्रा का, यानी सर्वोच्च उदारता. So now meditate either with the eyes closed or open, and we'll continue with the text. अपनी आंखें बंद या खुली रख सकते हैं और अभी साधना का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. And now imagine that from luminous empty space, Tārā Kadiravani appears in the space in front and slightly above you. She is peaceful and emerald green in color. She is seated on a moon disk atop a lotus flower, surrounded by numerous wisdom beings, the Jnana Sattvas. This can be Hindu, Buddhist, Christian, Jain, any deities, any gurus, all the wisdom beings that are meaningful to you appear in the space. She and all the wisdom beings appear radiant yet empty like rainbows in the sky. कल्पना कीजिए कि अपने आगे और ऊपर की तरफ चमकदार जगह से देवी तारा आपके सामने प्रकट हो रही है. देवी तारा शांतिपूर्ण है और उनका रंग पन्ना जैसा चमकीला हरा है. वह चांद की डिस्क यानी चक्र पर विराजमान है, एक कमल के फूल के ऊपर. यह कमल का फूल कई ज्ञान प्राणियों से गिरा हुआ है. आकाश में इंद्रधनुष की तरह देवी हरि तारा और सभी ज्ञानी प्राणी दीप्तिमान प्रकाशशील है, फिर भी उनमें शून्यता है. Her left hand is in the 3 jewels mudra at her heart and holds the stem of a blue lotus, the Utpala flower, which rests above her left shoulder. And upon the lotus is the 8-spoked wheel of Dharma. Her right hand is placed on her right knee and faces upwards, palm open, in the mudra of supreme generosity. देवी तारा का बायां हाथ उनके हृदय चक्र के पास है 3 रत्न मुद्रा में, और उन्होंने एक नीले कमल का तना पकड़ा हुआ है.
जो उनके बाएं कंधे के ऊपर है। नीले कमल के फूल पर अष्टमुखी धर्म चक्र है। देवी तारा का दाहिना हाथ उनके दाहिने घुटने पर है और हथेली खुली हुई है ऊपर की ओर। यह एक मुद्रा का प्रतीक है। वह है सुप्रीम जनरॉसिटी, यानी सर्वोच्च उदारता। With her limitless compassion, she protects beings from adverse circumstances and the 8 great dangers, each of which has an inner and an outer aspect. The elephant of ignorance, the fire of anger, the lion of arrogant pride, the water of clinging, snake of jealousy, thief of false views, demons of doubt, and imprisonment of greed. देवी तारा अपनी असीम करुणा के साथ हमें एडवर्स सर्कमस्टेंसेस एंड 8 ग्रेट डेंजर्स, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों और 8 महान खतरों से प्राणियों की रक्षा करती है, जिनमें प्रत्येक का इनर एंड आउटर एस्पेक्ट है, यानी आंतरिक और बाहरी पहलू है। अज्ञान का हाथी, क्रोध की आग, शेर का अत्यधिक अभिमान, मोह माया का सागर, ईर्ष्या से भरा सांप, झूठे विचारों का चोर, संदेह के राक्षस, लालच का पिंजरा। So now together we recite the Refuge and Bodhichitta prayer with our hands in Anjali Mudra. We'll do it 3 times in Hindi. I'll do once in English and then you can guide 3 times in Hindi. अभी हम शरण और बोधिचित्त प्रार्थना का पाठ करेंगे और यह प्रार्थना का 3 बार जाप करेंगे। And Sweety, I don't know if it's possible, but if you could say it in a similar way that I do, a little meditative, you could try. I'll try. You try. It's easy. Namo, noble Tārā, you who liberates beings from fear and suffering are the essence of all refuges. I take refuge in your vast loving compassion. In order to place all mother sentient beings in the state of enlightenment, I generate the 2-fold Bodhichitta of aspiration and application. नमो महान तारा, आप जो प्राणियों को भय और दुखों से मुक्त करती हैं, सभी आश्रयों का सार है। मैं आपकी विशाल प्रेममय और करुणा में शरण लेती हूँ। सभी मात्र सत्वों को ज्ञानोदय की स्थिति में रखने के लिए मैं अभीप्सा यानी एस्पिरेशन और अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के दिव्यगुणित बोधिचित्त उत्पन्न करती हूँ। नमो महान तारा, आप जो प्राणियों को भय और दुखों से मुक्त करती है, सभी आश्रयों का सार है। मैं आपकी विशाल प्रेममय और करुणा में शरण लेती हूँ। सभी मात्र सत्वों को ज्ञानोदय की स्थिति में रखने के लिए मैं अभीप्सा और अनुप्रयोग के दिव्यगुणित बोधिचित्त उत्पन्न करती हूँ। नमो महान तारा, आप जो प्राणियों को भय और दुखों से मुक्त करती हैं, सभी आश्रयों का सार है। मैं आपकी विशाल प्रेममय और करुणा में शरण लेती हूँ।
सभी मात्र तत्वों को ज्ञानोदय की स्थिति में रखने के लिए मैं अभिप्सा और अनुप्रयोग के दिव्यगुणित बोधिचित उत्पन्न करती हूँ। Now for the self-visualization and mantra, we sound Tara's seed syllable, tam. With the first tam, manifest yourself as Tara Kadiravani, or Sengdeng Nak, emerald green in color, peaceful and luminous. You are seated on a full moon disc upon an emerald green lotus flower, and your right leg is extended slightly forward, stepping down to help beings in samsara. This should also be the left leg, okay, is close to your body, symbolizing resting in nirvana. अभी हम प्रत्युक्षकरण और मंत्र सस्वर का पाठ करेंगे। हम तम का उच्चारण 3 बार करेंगे। हर बार जब उच्चारण करेंगे हमें कुछ विजुअलाइजेशन करना है। ध्वनि देवी तारा का 20 शब्दांश है तम। पहले तम के साथ अपने आप को देवी तारा के रूप में प्रकट करें। हरे रंग में, शांतिपूर्ण और चमकदार। आप एक हरे कमल के फूल पर चांद की डिस्क पर बैठे हैं। आपका दाहिना पैर का स्थान थोड़ा सा बाहर की तरफ है, नीचे उतरते हुए, जिसका प्रतीक है कि संसार में प्राणियों की मदद करने के लिए आप तैयार हैं। आपका बायां पैर आपके शरीर के करीब है, निर्वाण में विश्राम का प्रतीक है। Your left hand is in the 3 jewels mudra, and you can take the mudra yourself with the thumb and the ring finger touching, holding the stem of the blue lotus flower which rests above your left shoulder. Upon the lotus is the 8-spoked wheel of Dharma, emitting wisdom light rays in all directions. Your right hand is resting on your right knee with an open upward-facing palm in the mudra of supreme generosity. So take that mudra and feel the position of Tara. And in your heart chakra is the emerald green seed syllable tam, which sits atop a moon disk within a sphere of emerald green colored light. आपका बायां हाथ 3 रत्न मुद्रा में है। इस मुद्रा को आप ले लीजिए, यानी अपने अंगूठे को और रिंग फिंगर को एक साथ लीजिए और अपने हाथ चक्र के वहां ये 3 मुद्रा को बना दीजिए। आपका बायां हाथ 3 रत्न मुद्रा में है, नीले कमल के फूल के तने को पकड़े हुए है, जो आपके बाएं कंधे के ऊपर है। नीले कमल पर धर्म का अष्टमुखी चक्र है, जो सभी दिशाओं में ज्ञान के प्रकाश की किरणें फैला रहा है। आपका दाहिना हाथ आपके दाहिने घुटने पर है। आपकी हथेली खुली ऊपर की ओर है। इस मुद्रा का प्रतीक है सर्वोच्च उदारता। आपके हृदय चक्र में हरा रंग का बीज अक्षर तम है, जो चंद्रमा की डिस्क के ऊपर बैठा है। तम और डिस्क दोनों भी हरे रंग के प्रकाश के क्षेत्र के भीतर है। Inhale. सांस को अंदर लीजिए। Ta
You become Tara now. अपने आप को देवी तारा के रूप में प्रकट कीजिए। Second sounding of Tam, as Tara Kadiravani, imagine you are sending rainbow light from the emerald green thumb at your heart, making offerings of rainbow light to all the Taras and wisdom beings in the space above you. अभी हम तम का उच्चारण दूसरी बार करेंगे, तभी हमें विजुअलाइजेशन करना है। हरि देवी तारा के रूप में कल्पना कीजिए कि आप हृदय चक्र में हरे रंग के तम से इंद्रधनुषी प्रकाश प्रसाद के रूप में सभी देवी तारा और ज्ञान प्राणियों को आपके ऊपर के स्थान में समर्पित कर रहे हैं। Inhale. सांस को अंदर लेते हुए हम अभी तम का दूसरी बार उच्चारण करेंगे। And we say it together. Inhale. In the third sounding of Dham, the wisdom beings joyfully send rainbow wisdom light back to you, blessing and empowering you. You become fully activated as the luminous emerald green Tara Kadiravani. अभी तम की तीसरी ध्वनि यानी तीसरी बार जब तम का उच्चारण करेंगे, हमें क्या विजुअलाइजेशन करना है? ज्ञानी प्राणी खुशी खुशी आपके पास इंद्रधनुषी ज्ञान के प्रकाश को भेज रहे हैं, आपको आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करते हैं और इसी के साथ आप चमकीली हरे देवी तारा के रूप में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। Inhale. Now, mantra recitation. As you recite the mantra, imagine it circles counterclockwise around the thumb in your heart, like a little mantra locomotive. The mantra stands vertically around the edge of the moon disk and faces outward. The thumb and the mantra at your heart emanate rainbow light in all directions. This light and the turbulent wisdom light emanating from the Dharma wheel at her shoulder free beings from adverse circumstances and the 8 great fears. Through the rays of wisdom light, see all beings become free from suffering as they awaken to their true nature. The light and the sound of the mantra are expressions of Tara's love and compassion for all beings without exception.
हम मंत्र का पाठ करेंगे। जैसे ही आप देवी मंत्र पढ़ते हैं, कल्पना करनी है कि यह आपके हृदय चक्र में तम के चारों ओर घड़ी की उल्टी दिशा में यह मंत्र चक्कर लगा रहा है। मंत्र चंद्रमा की डिस्क के किनारे के चारों ओर वर्टिकल यानी लंबवत खड़ा है। इट्स फेसिंग आउटवर्ड यानी मंत्र बाहर की ओर अनुमुख है। आपके हृदय चक्र में स्थित तम और मंत्र सभी दिशाओं में इंद्रधनुषी प्रकाश फैला रहा है। ये इंद्रधनुषी प्रकाश और धर्म चक्र से निकलने वाला ज्ञान प्रकाश हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों और आत्म मान भयों से हमें रक्षा करते हैं और सभी प्राणियों को इनसे मुक्त करते हैं। ज्ञान प्रकाश की किरणों के माध्यम से देखें कि सभी प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होते ही अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सारे प्राणियों के लिए मंत्र का प्रकाश और ध्वनि देवी तारा के प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति है। We'll recite together. If you have a mala, you can use the mala. We'll do 21 slowly, and then we'll speed up a little bit, reciting like the buzzing of the bees, like a vibration through the body. अभी हम मंत्र का जाप 21 बार करेंगे और 21 बार करने के बाद मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की तरह ये मंत्र का जाप करेंगे at a faster speed. But be comfortable. It doesn't have to be fast. Okay. अपनी सुविधा के हिसाब से भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और अभी जाप करते हुए खुद को देवी तारा के रूप में महसूस करें। Om Tare Ture Danatraya Svaha. 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 Om Tare Ture Danatraya Svaha.
Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Ture Danatraya Svaha. Om Tare Om Tare Om Tare Om Tare Om Tare
Tare tutare ture tanatraya swaha. And so now we'll do the dissolution. After reciting the mantra, imagine the universe and its inhabitants dissolve into light, and that light dissolves into you as Tara Kadiravani. Maybe Sweety Translate will do one sentence at a time so people can do it step by step. You're muted, hon. You're completely dissolved. Dissolution. विंगटन। फिर मंत्र का जाप करके कल्पना करें कि ब्रह्मांड और उनके निवासी प्रकाश में डिसॉल्व यानी विलीन हो रहे हैं और वह प्रकाश आप में देवी तारा के रूप में विलीन हो रहा है। Good. We'll do one sentence at a time. Yeah, perfect. Then you dissolve into light from the crown of your head and the soles of your feet, converging slowly at the center of the heart and dissolving into that emerald green sphere containing the moon disk and the mantra and the seed syllable. आप संपूर्ण रूप से आपके सिर का मुकुट और आपके पैरों के तल को, साथ ही हृदय चक्र में चंद्रमा की डिस्क, मंत्र और बीज शब्द, ये सब हरे रंग के गोले में विलीन हो जाते हैं। And then this sphere and all its contents dissolve into the thumb. And finally, the thumb dissolves into the base, from the base to the top, which dissolves into luminous emptiness. तब ये हरा रंग का गोला और इसकी सभी सामग्री तम में विलीन हो जाती है। अंत में तम पूरी तरह से चमकदार शून्यता यानी ल्यूमिनस एम्प्टीनेस में विलीन हो जाता है। Rest in spacious awareness as long as you like, free of fabrications, free of distractions, just rest. जब तक चाहे विशाल जागृता में विश्राम करें, मनगणत विचारों और व्याकुलता से मुक्त सिर्फ विश्राम करें। If thoughts of the past or the future pull you away from meditation, release those thoughts and return to the moment and the breath. जब अनावश्यक विचार शुरू हो, भूतकाल के या भविष्य के, फिर अपने आप को देवी तारा में महसूस करें और प्रेजेंस में आ जाइए, प्रेजेंट मोमेंट में लौट आइए।
And now when discursive thoughts begin to arise, that's a natural sign that it's time to close the practice. Feel yourself again coming back into your form as Tara Kadiravani. Feel yourself as her again. You can even take the mudras. जब अनावश्यक विचार शुरू हो तो खुद को देवी तारा में देवी तारा के रूप में लौट आए और महसूस करें अपने आप को उनके रूप में चमकदार और शक्तिशाली और पूरी तरह से एकीकृत. And as you go about your day, try to embody Tara as much as you can. जब आप आज का दिनचर्या की शुरुआत करेंगे, अपने आप को देवी की रूप में ही रखिए. Now we'll recite the dedication of merit as a closing to our practice. अभी हम गुण के समर्पण का पाठ करेंगे. Through this virtue, may I quickly attain the state of noble Tara. May I bring each and every being without exception to that state. May all beings be healthy, free from suffering and its causes, and may they awaken to their true nature. इस गुण के माध्यम से मैं शीघ्र ही महान तारा की स्थिति प्राप्त कर लेती हूँ. मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी प्राणी स्वस्थ रहे, कष्टों से मुक्त हो और वे अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत हो जाए. Thank you. धन्यवाद. So we can go right into the journey with Tara, or I can give you a few minutes to take a break for the bathroom or tea. What do you think? It feels good at 6 o'clock in the morning, huh? Do you need to use the bathroom? Make some tea? We'll come back for our journey? Yeah. So we give them a 5 minutes biological break, or okay. Let's do 10, or we have maybe, yeah, we'll do 10 minutes. We'll do 10 minutes. Okay. अभी हम 10 minutes का break लेंगे, उसके बाद देवी तारा की यात्रा start करेंगे. Journey with Goddess Tārā. Okay, welcome back. So now we're going to do a journey with Tara, and this is more of a modern style of encountering Tara and also becoming Tara and feeling the wisdom of the Goddess Tārā within you. अभी हम देवी तारा की यात्रा की शुरुआत करेंगे और इससे हमें देवी तारा के ज्ञान का विशिष्ट अंतर्दृष्टि भी प्राप्त होगा. ये एक मॉडर्न तरीका है जहां पे खुद को हम एक देवी के रूप में महसूस करेंगे. So what we just did is more traditional, and now what we're going to do is a bit more innovative or modern. जो हमने जो पहले साधना किया था, कल जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस सीखा था, वो ट्रेडिशनल मेथड है. अभी ये जो जर्नी करेंगे वो मॉडर्न मेथड. And you'll have a chance to ask Tara some questions. Maybe you've been trying to decide important decisions in your life, or you are experiencing physical challenges that you need help understanding or healing from. So you can ask Tara any question you want in this journey.
अभी हम जब देवी तारा के साथ यात्रा की शुरुआत करेंगे, आप देवी तारा से प्रश्न या कई प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके जीवन के संबंध में हो। आपको कुछ अगर डिफिकल्टीज हो रही है, भले वो फिजिकल, मेंटल, कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। At a certain point in the process, in the journey, I will tell you to switch positions and become Tara. So you want to make sure to have an empty cushion in front of you. अभी ये यात्रा के प्रोसेस में आपको स्वयं को देवी तारा के रूप में प्रकट होना है और ये प्रश्नों का उत्तर देना है। ये करने के लिए आपको जगह यानी स्थान बदलना पड़ेगा। तो जब स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिए कि आपके आसपास से आपके सामने की और जगह खाली हो, ताकि आप सीट बदल सकते हैं। So you can start in one position, and then when I tell you to switch positions, you'll try to keep your eyes closed so you can stay in the meditation. So you can have an empty pillow or something in front of you, or a chair, and then you switch positions and become Tara in your new position. जितना हो सके इस जर्नी के प्रोसेस में अपनी आंखों को बंद रखिए और अपने सामने की ओर तकिया या कुर्सी की सुविधा कीजिए, ताकि जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हमें देवी टीचर चंद्रा ईस्टन से जगह बदलने के लिए, तो हमें आंखें बंद करते हुए ही जगह बदलना है। Then after you answer the question as Tara, I'll tell you when to come back into your original seat. जब हम देवी तारा के रूप में प्रश्न का उत्तर दे दें, फिर बाद हमें वापस इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि स्वयं के रूप में लौट आए और अपनी सीट पे लौट आए। You'll see, and don't worry if you don't remember any of that. I will guide you through the whole process. No problem. Easy. अभी जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर याद नहीं रहेंगे तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। हर स्टेप पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा। Okay. It's about a 30-minute journey. लगभग इस जर्नी प्रोसेस में 30 मिनट लगेंगे, 30 minutes. Okay. So find a comfortable position. Make sure you have an empty cushion in front of you. And allow your eyes to close. अपनी आंखें बंद कीजिए, कंफर्टेबल स्थान पे बैठ जाइए, सामने की ओर जगह खाली रखिए। हम अभी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। Take some deep breaths and relax any tension with the out breath. गहरी सांस लीजिए। जो स्ट्रेस इमोशंस है वो जब सांस बाहर लेते हैं यानी एक्सेल करते हैं, उसी के साथ इमोशन स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, उसको रिहा कीजिए। Take a moment to generate your motivation to practice for the benefit of yourself and all beings. This is called raising Bodhichitta. अपने और सभी प्राणियों के लाभ के लिए अभ्यास करने की प्रेरणा उत्पन्न करें। इसे बोधिचित्त बढ़ाना कहा जाता है। Now, first step. Imagine that Tara Kadiravani appears in front of you in the sky as we sound her seed syllable Tam once. You can maybe just translate one sentence at a time. Step 1 यानी चरण 1, देवी तारा की उपस्थिति का आह्वान करेंगे जिनके साथ आप यात्रा करना चाहते हैं। देवी तारा को पुकारे जिनके साथ आप आगे संवाद यानी कम्युनिकेट करना चाहेंगे।
देवी ध्वनि तारा का बीज अक्षर तम का एक बार हम उच्चारण करेंगे। Inhale together. सांस अंदर लेते हुए Da. See Tara in front of you just as you normally do in the practice sadhana. And notice the details of this Tara, her size, her color, her character, her symbol on her lotus flower, the Dharma chakra, and the look in her eyes. देवी तारा को अपने सामने वैसे ही रूप में देखे जैसे आपने साधना करते हुए कल्पना की थी। ध्यान दे देवी तारा के विवरण में, उनका आकार, हरा रंग, चरित्र, नीले कमल के फूल पर अष्टमुखी धर्म चक्र, और उनकी आंखों में देखे। Notice something about this Tara that you did not see before. देवी तारा के बारे में कुछ ऐसा नोटिस करे जो आपने पहले नहीं देखा हो। Now notice the environment around Tara. What kind of place is she in? And what is the feeling in the environment? You can translate. अब देवी तारा के आसपास के वातावरण पर ध्यान दे। वह किस तरह की जगह पर है? आप वातावरण में क्या महसूस कर रहे हो? Is she in a place that you've been? Can you see the time period? And can you see the country she is in? क्या देवी तारा उस जगह पर है जहाँ आप पहले गए हो? क्या आप समय अवधि देख सकते हैं? क्या आप उस देश में देख सकते हैं जिसमें देवी तारा है? And do you notice any smells or sounds? Is she on this earth or another dimension? And if another dimension, notice the details of that place. क्या आप कोई सुगंध महसूस कर सकते हैं? या कोई आवाज सुनाई देती है? क्या देवी तारा इस पृथ्वी पर है या किसी अन्य आयाम में है? यदि देवी तारा दूसरे आयाम में है तो उस स्थान के विवरण पर ध्यान दे।
Second step, Tara takes you on a journey. Now imagine that Tara takes you on a journey to a special place, and you follow, walking behind her, and notice what the path is like and how it changes as you proceed. Step 2, चरण 2. देवी तारा आपको एक यात्रा पर ले जाती है. अब कल्पना कीजिए कि देवी तारा आपको एक खास जगह की यात्रा पर ले जाती है. आप उनके पीछे चलते हैं. ध्यान दें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वह रास्ता या पथ कैसा है और उसमें क्या बदलाव आ रहा है. Do you notice any smells or sounds? And what is the feeling in the environment? क्या आपको कोई सुगंध महसूस हो रही है या कोई आवाज सुनाई देती है? आप वहां के वातावरण में क्या महसूस कर रहे हो? And when you arrive in that special place Tara is taking you, notice where it is. जब आप उस विशेष स्थान पर पहुंचते हो जहां देवी तारा आपको ले जा रही है, तो ध्यान दें कि वह जगह कौन सी है. What are the qualities of the place that surrounds you? What time of day is it? What is the temperature? Are there any particular smells? What era is it? And how do you feel in this place? Does it remind you of anywhere you've been before? आपके आसपास के स्थान के क्या गुण हैं? यह दिन का कौन सा समय है? वहां का क्या तापमान है? क्या वहां कोई विशेष सुगंध है? यह कौन सा युग है? आपको इस स्थान में कैसा लग रहा है? क्या यह स्थान आपको याद दिलाता है कि आप पहले कभी आए हो? Tata then explains why she has brought you here and why this place is important to you. देवी तारा बताती है कि वह आपको यहाँ क्यों लाई है और यह जगह का आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है.
Step 3, asking Tara your questions. Now in this place, ask Tara any questions you have concerning the dynamic you would like to work with, maybe challenges in your life or uncertainties, advice, particularly connected with this Tara, compassion, protection from fear and danger, but whatever you like. And you can ask one or several questions. Step 3, चरण 3, देवी तारा से अपने प्रश्न पूछे। अब इस स्थान पर देवी तारा से कोई भी विषय में प्रश्न पूछे जो आपके गतिशील होने के संबंध में हो, जिस पर आप काम करना चाहते हैं। जीवन में देवी तारा की ऊर्जा और प्रबुद्ध अवतार लेने में आपको चुनौतियां हो सकती हैं। इस संबंध में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप एक या कई प्रश्न पूछ सकते हैं। So now asking Tara your questions, or one question first, and you can say it out loud. Your eyes closed, asking Tara your question. आंखें बंद करते हुए देवी तारा से एक या कई प्रश्न पूछ सकते हैं और इसका उच्चारण भी आप जोर से कर सकते हैं। When you're ready, once you've asked your question, switch places, keeping your eyes closed, and take the seat of Tara. जब आपने प्रश्न पूछ लिया है, तो अब देवी तारा की सीट पे आ जाए, अपनी जगह या स्थान बदल दे। And take a moment to settle into Tara's body. And notice how it feels to be Tara. देवी तारा के शरीर में बस जाओ। ध्यान दे कि देवी तारा के शरीर में आपको कैसा महसूस हो रहा है। And notice how your normal self looks from Tara's point of view. देवी तारा के दृष्टिकोण से आपका सामान्य स्वरूप कैसा लग रहा है? And after settling into Tara's body, now answer the questions, speaking as Tara. You can speak out loud or quietly as you wish. देवी तारा के शरीर में बसने के बाद प्रश्न या प्रश्नों का उत्तर दे। देवी तारा के रूप में उत्तर दे। आप ये उत्तर
का उच्चारण जोर से भी कर सकते हैं या मन में भी कर सकते हैं। Once you've answered the question, if you like, you can switch back to ask another question. And I'll give you about 5 more minutes to move at your own pace. You can ask 1, 2, 3 more questions in your own time. आप देवी तारा के साथ इस तरह से बातचीत जारी रख सकते हैं। आपकी पसंद अनुसार प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए फिर अपनी सीट पे लौट जाए, प्रश्न पूछे, वापस देवी तारा की सीट पे लौटे और उनका उत्तर दे। If you'd like to write down any notes or answers, you can do that if you wish. You don't have to, but you can. अगर आप चाहें तो ये प्रश्न और उत्तर आप लिख भी सकते हैं।
we'll begin to finish our last round of question and answer. Just another minute or two. अभी 1 या 2 मिनट में हम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त करेंगे. And then when you're finished, slowly return to your original position. जब आप समाप्त कर ले तो अपनी सीट पे लौट आए. And take a moment to feel the help and protection that Tata has offered you. कुछ समय निकाले. सहायता और सुरक्षा जो देवी तारा ने आपको दी है उसे महसूस करें. And now Tara turns away for a moment. And when she turns back, she is holding a gift for you. अब देवी तारा दूर हो जाती है और जब वह पीछे मुड़ती है तो वह आपके लिए एक उपहार रखती है. And Tara explains the meaning of this gift to you. Notice the details of the gift. Oh, and hold it. So she gives it to you. Let's start again. Tara gives you the gift, and you hold it and notice the details of the gift. Tara explains its meaning to you. देवी तारा आपको यह गिफ्ट उपहार देती है. आप इसे धारण करते हैं और उपहार के विवरण को नोटिस करते हैं. देवी तारा ये उपहार के अर्थ की व्याख्या करती है. And then the gift with all its potency dissolves into your heart. And notice the feeling of the gift inside of you. कल्पना कीजिए कि उपहार की सारी शक्ति आपके हृदय में घुल जाती है. आप अपने अंदर उपहार की भावना को महसूस करें.
Now see Tara in front of you and look into her eyes and feel her energy pouring into your body. And as you feel the energy of Tara entering you, it spreads all the way down to the soles of your feet, to your fingertips, and throughout your whole body. अब अपने सामने देवी तारा को देखे, आंखों में देखे और महसूस करे कि उनकी ऊर्जा आपके तन में प्रभावित हो रही है। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि देवी तारा की ऊर्जा आप में प्रवेश कर रही है, वह सभी तरह से प्रवेश हो रही है, नीचे के तलवों तक फैल जाती है। आपके पैर, आपकी उंगलियां, आपके पूरी शरीर में ये ऊर्जा फैल जाती है। Now imagine that Tara dissolves into light and notice the color of this light. Feel the light dissolving into you, integrating the luminosity into every cell of your body. Take note of the feeling of the integrated energy of Tara in your body. अब कल्पना कीजिए कि देवी तारा प्रकाश में विलीन हो जाती है। इस प्रकाश के रंग पर ध्यान दें और महसूस करें। ये प्रकाश आप में घुलते हुए एक चमक को आपके शरीर की हर कोशिका में एकीकृत करे। ये प्रकाश आप में घुलते हुए इस चमक को आपके शरीर की हर कोशिका में एकीकृत करे। आप अपने शरीर में देवी तारा की एकीकृत ऊर्जा को महसूस करें। Now you, with the integrated energy of Tara, also dissolve. देवी तारा की एकीकृत ऊर्जा के साथ अब आप भी विलीन हो जाते हैं। Final step, rest in awareness. Rest in the state that is present after the dissolution. Just rest. Step 6, चरण 6, जागरूकता में विश्राम। विलीन होने के बाद जो स्थिति है उसमें विश्राम करें, बस विश्राम करें।
when thoughts begin to come again, we gradually come back to our body, recalling the feeling of the Tāra's energy in your body. जब तक अनावश्यक विचार फिर से शुरू न हो, तब तक आप विश्राम करें। अपने शरीर में देवी तारा की ऊर्जा की भावना को याद करें। And as you open your eyes, maintain the feeling of Tāra's energy in your body and see the world through the eyes of Tārā. अब धीरे धीरे वापस अपने शरीर में आ जाए। अब जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, अपने शरीर में देवी तारा की ऊर्जा की भावना को बनाए रखें और दुनिया को देवी तारा की नजर से देखें। And we'll dedicate the merit, the accumulation of positive energy that you've generated through this transformation to the benefit of all beings everywhere. गुण का समर्पण करेंगे। गुण को समर्पित करें। आपने इस ध्यान के माध्यम से परिवर्तन करके जो सकारात्मक ऊर्जा का संचय उत्पन्न किया है, इस ऊर्जा को दुनिया के सभी प्राणियों के लाभ के लिए समर्पण करें। And post meditation, as you go about the rest of your day, imagine that you are Tārā and that everyone you meet is a manifestation of your mandala. As you eat, you're feeding Tārā. As you dress, you are dressing her. Imagine that the world is transformed into a luminous dimension, and this is called pure perception. ध्यान के बाद जैसे ही आप अपने बाकी के दिन की शुरुआत करते हैं, कल्पना करें कि आप देवी तारा हैं और आप जिस किसी से मिलते हैं वो आपके मंडला की अभिनय है। आप खाते हैं तो देवी तारा को खिला रहे। आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आप देवी तारा को तैयार कर रहे हो। कल्पना कीजिए कि दुनिया एक चमकदार आयाम में बदल गई है। इसे कहते हैं शुद्ध अनुभूति, प्योर परसेप्शन। Thank you. धन्यवाद। How do you say thank you in Hindi? धन्यवाद। Dhanyavad. धन्यवाद। Dhanyavad. So feel free to take notes if you had any special messages or answers that were helpful for you. It's nice to note them down so you remember. I took notes. I also met Tārā and I got to ask her some questions. I hope you enjoyed that. And now we can also share as a group for a little while and then we'll sing to close. But you've had 3 sessions with me with a lot of details and new practices maybe. So I want to give you some time to ask questions, really rooted questions that are rooted in the practice, like you've been doing. Very good questions rooted in the practices that we've learned in these 3 days. And I can see your chats too. You can ask chat questions or raise your hand and unmute, but just keep the questions a little short so we have time for everyone to ask their question. अभी जो हमने देवी तारा की यात्रा की है, जो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, वह कहीं डायरी में या किधर आप लिख सकते हो। अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू करेंगे। अपने हैंड्स रेज कीजिए। कृपया ये जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट और क्रिस्प रखिए।
I'll let you moderate, Sweety. Yes, yes. Oh, okay. One last thing before you ask. I would love to hear what Tara's gift was for you, if you want to share. To me? Or to everybody? When you before your question, tell me her gift to you. I first want to thank you all, the entire team, for giving us the opportunity. And I have no words. I lost words. My first question is, or I'll first share my experience. Before the journey with Tara, when I was imagining with the green Tara, and when I was focusing, I saw a blue eye. It was so beautiful staring at me. And that is one thing. And another thing, while chanting the mantra, while I was spinning in the anti-clockwise direction, it took me to a different world. I saw a blue sky and it was taking me somewhere. I really enjoyed that moment. And at the same time, I had some kind of fear that was blocking me from going beyond. So how can I, come out of that fear and go beyond what I am? Also that. And another thing is, should I ask all the questions continuously or should I wait for the answer? Sure. Yeah. And another thing, you said Tara, some name, I could not get it, like Kadiravani. Kadiravani, yeah, that's the Tara of Kadiravani forest, of the acacia tree forest. Oh, okay. That's her special pure land, like her magical, her palace, her place. Okay, awesome. So yeah, okay. My question is like, how can I move on from the fear? It's interesting. I had a similar experience on the journey. She took me very far and I had some fear. So I identify with your question. Do you want to translate the question into Hindi so people can understand? Yes. Yeah, why don't you translate the question? Yeah. Hasti, you want to translate? You want me to do the translation? Yeah, I don't know Hindi. I cannot speak Hindi. Achha. Basically, your first question was, where are the goddess took you and there was blockages. You cannot move ahead, right? During the mantra. Yes. Mm-hmm. So वो बोल रहे हैं, इनका प्रश्न यह है कि जब वो मंत्र का हम रिसाइट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, राइट, वहां पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, या शी वांट्स सम इंप्रूवमेंट, राइट? यस, तो उसके बारे में अभी जानकारी देंगे. जो उत्तर आएगा मैं वापस उसको ट्रांसलेट करूंगी. यस, यू कैन आंसर टू. ओके. It's very common for us to feel this type of fear of the abyss, fear of the space. Like she said, it took her into a blue sky, very nice, but then there's the fear because, okay, just translate that because this might get a little deeper. Okay. Basically, वो बोलना चाहते हैं कि वो आसमानी, right? Just can you repeat it again once again? Sorry. Can you repeat it again? Yeah. I'm a little distracted, sorry. Okay. Nobody chat to Sweety. Don't look at the chat, Sweety. Yeah, I'm not looking at the chat. You have your team. You're the boss. Yeah, tell your team to take care of the chat. Team Devi Circle. Okay. Okay. Meditation, because it takes us into deeper states. We meet the same type of, we can enter into a spacious place that can be beautiful, but also frightening. जब हम मेडिटेट करते हैं या साधना करते हैं तो हमें ज्ञानोदय की अवस्था में भी ले जा सकते हैं, और साथ ही हमारे अंदर कुछ फियर्स भी पैदा हो सकते हैं. It's like suddenly you're flying in the sky and you look down. Oh my God, what's happening? जैसे कि एग्जाम्पल, आप साधना करते हुए महसूस करते हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, फिर नीचे देखते हैं और डर लगने लगता है.
And the sense of self, right? The sense of I, the ego, you know, Sweety, ego. Yes. It feels threatened by the big space. Yes. Mm-hmm. सेल्फ ईगो जो हमारा रहता है वो कभी कभी हमें ये डर पैदा कर देता है. So with more practice, Hasini, with being very gentle with yourself and coming back to this space again and again, you will feel more familiar with it. You'll become like a bird flying in that space, and you'll not feel the fear. So basically जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको ये मृत्यु का जो डर है, जो आपको फियर है, वो धीरे 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 उसका रिहाई होएगा, वो वेन ऑफ होता जाएगा. Okay, my And that understanding. is the preparation for death. That if we can have that confidence, then when it comes the time for us to take off this cloak of the body, right? Take the coat off of the clothing of the body off. We're more prepared, we're ready, and we have less fear. And that is the great gift of Tārā. She helps us to work with our fear, right? Danger, fear of death, fear of not being good enough, fear of failure, fear of not being loved, all the different kinds of fears we have. Big fears, little fears. Tārā is the goddess of overcoming and healing our fear. देवी तारा की जो महान क्वालिटी है, जो हमें 8 महान खतरों की रक्षा करती है. तो बेसिकली साधना का जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, हमारे फियर्स धीरे धीरे वैसे ही वो उसका रिहाई होता जाएगा. Okay. My understanding is with more practice, I'll come out of the fear and I can move on. Is that right? Yes. Yes, but that practice has to have the very important ingredient, like you're making a recipe, like a soup or something, ingredient of love and patience and compassion for yourself. So basically धीरज, करुणा और बहुत सारा प्यार के साथ ये साधना प्रैक्टिस करना है रोज. Okay. Yep. And my final question is, like, coming back to your question of what the gift Tārā gave me. First thing is, Tārā took me to my dad. Like a year ago, when he left his physical body, I cannot be with him and I cannot see him because of the pandemic and all the flight cancellation and all those stuff. I could not see him. I could not be with him when he left his body. Tārā took me to him. And in 6 months, and I also had a miscarriage, and Tārā gave me a baby. So these are the two. I'm sorry. These are the two gifts Tārā gave me. And my question is, when we ask question to Tārā and Tārā answers back, so are we imagining those things, or is it like convincing ourselves, or will Tārā really answers us? Like, how does that work? First of all, thank you for sharing, and I'm sorry to hear that you couldn't be with your father and about your miscarriage, and thank you for sharing that. And so this is the magic of this practice, both the traditional meditation and the more contemporary journey we took, is in each case, we get to become Tārā, right? And there's a kind of special energy that happens then where the wisdom that's probably already within us gets to come out and express itself. Now, whether that's really Tārā out there speaking through us, or if that's really our inner wisdom, our inner Devi speaking, honestly, I don't think there's a difference between the two, because the essence teachings say that our Buddha mind, right, like our Brahman or Atman, however you want to say, the spark of wisdom within us is none other than Tārā. Tārā is your essence. So when you switch positions and take your seat as Tārā,
you get to bring that to fruition. You get to bring that into being. Okay. I hope that, yeah. Yeah. This Thank is you so about much. embodiment. We will embody Tara. We are Tara. How do you say that, sweetie? We become Tara and we channel her wisdom. हम स्वयं तारा के रूप ले लेते हैं और उनका जो ज्ञान रहता है वो भी हम प्राप्त कर लेते हैं. Yeah. You are Thank all Tara. All of us are. I see you. I'm so emotional right now. Hi, Chandra. I actually Hi. had signed up for one of your classes with Sally because I'm also a student of Sally Kempton. Oh, And great. you weren't there, and this I is a couldn't- great opportunity. I'm so blessed to be practicing with you and studying with you. It's been beautiful. Tara's been coming to me for a while, for many years now, but this is the first time I've actually done a sadhana of Tara, and it's been amazing. So thank you. My question was actually, you've already answered the question about Oh, You got perfect. muted. Yes, you've got muted. Oh, no, I think she. whether we are imagining the answers that Tara is giving, or Yeah, you switch positions I and think I need to become do- Tara. That's very important. Okay, everybody. Everybody should know that. And maybe it wasn't that clear Right. here, but that's why we switch positions and we really become Tara. Remember, we said we become Tara. And then you Right. answer those questions as Tara. So yeah, Right. you know, you can, like if you're in an airplane or you can't move, you can imagine switching positions and becoming Tara, and it works, it's okay. But I've actually talked to therapists about this. They say it's actually a known thing where if you, it's because there's other forms of therapy that does this, like Gestalt therapy. It's called empty chair therapy. When you actually move and switch positions, it's a vestibular change in the head, and it helps you change your vantage point, your perception. And so if you can move, it's really good. Okay. And then you become her. Mhm. And that Right. magical moment when you see your normal self from Tara's point of view, did you have that moment there? See your normal was- self from Tara's point of Right. view? right, that was really sort of just when you said see everything from Tara's point of view, there was a shift that happened. Yeah, good. Okay, good. Yeah. So later, yeah. Okay, great. Yeah, try it Thank you. again. You have the script and you can take yourself through that process. So maybe, Sweety, you could synthesize that for everybody. बेसिकली जब हम तारा गॉडेस तारा का जो जर्नी की यात्रा करते हैं उनके साथ, वो जगह बदलना क्यों महत्वपूर्ण है वो उन्होंने अभी बताया है कि जगह बदलना है, और जगह बदलने से जब हम स्वयं को तारा के रूप में, सामान्य रूप को जो हमारे देखते हैं, तो हम कैसा महसूस करते हैं. इसीलिए ट्राई कि हम स्थान बदले. Yeah, there's a wonderful chat by Vijay Shri. I want to read that out loud and people can see it. It's exactly what I'm trying to say. She says, the answers which we get are from our higher self. So basically we are gods or goddesses. By practicing meditation more, we hear our higher self and become oneness with that. Exactly. Exactly. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you, ma'am. This session is very excellent, but I have one doubt, ma'am. While I am practicing, practicing this meditation, we should practice the posture of sitting like Tara, or the left ring round self. I can't understand how to practice that one. Only I am sitting like the posture of Tara. So higher energies came in my body, and also the Tara always answer to my questions also while I am standing, not in the meditation also. Now today onwards, I miss that meditation, but I am hearing, and I am that way of vibrations, that meditation also. So I imagine that like Tara answers to me my own
questions. So I'm doing my work also in my house. So that's why how to meditate. I want to know that. I forgotten that posture is correctly. I'm getting, and also the left side ringing around self. I can't. Please repeat that one. Thank you very much, ma'am. उनका प्रश्न यह है कि जब हम ये जर्नी करते हैं देवी तारा के साथ, तो उनका जो पोजीशन है लेग्स एंड हैंड्स का, उनका पोजीशन, सो उसके बारे में अभी जानकारी लेंगे. Basically, she's asking of the तीन रत्न मुद्रा. Yeah. And the leg position and the hands position. Yeah. Okay. We'll do again so you can see my body. Let me just say that your housework, Tara. Tara, cleaning the house is okay. You are the goddess. So with the position, now I'm sorry, my camera is not better. If I put the computer too far away, then you can't hear me. So it's a little difficult, but maybe I'll show you down. So right leg a little forward, right? Remember in the drawing, she's stepping forward. You don't have to take this position, by the way, you can just imagine it. And then the left leg, you imagine or you take it so that it's close to the body. This is called the posture of royal ease, like a Rajani, like a queen. Or maybe just start with the feet. जो लेफ्ट लेग है वो आपको नजदीक रखना है विश्राम के पोजीशन में, और जो राइट लेग है वो आगे की ओर रखना है, जैसे आप नीचे उतर रहे हो वैसे. But if you want to take lotus or sit in a chair, you can do that and just imagine the legs like that. It's okay. You can imagine it. आप पद्मासन का भी पोजीशन ले सकते हो और लेग के पोजीशन को इमेजिन यानी कल्पना कर सकते हो. Okay, but the mudra was your main question. Okay, so here's my left hand. I'm taking my thumb and my index finger and I'm gently touching them. Not the ring finger, not index, sorry. Ring finger and my thumb, okay? Touching. The thumb and the ring finger symbolize the union, like a circle, the union of wisdom and compassion. These two, in Buddhism, the wisdom and compassion are said to be the two wings of the bird of enlightenment. You need both. If you don't have both, you fly in a circle. Okay, so this symbolizes the union of wisdom and compassion. You want to translate? Yes. जब हम तीन रत्न मुद्रा का पोजीशन लेना है तो हमको लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है, जो उनकी रिंग फिंगर है, अपनी जो रिंग फिंगर है और अंगूठे को एक साथ करना है, उसका यूनियन करना है, और इसका प्रतीक है ज्ञान और असीम करुणा. ज्ञान और असीम करुणा, विजडम एंड कंपैशन, और ये यूनियन करना है दो उंगली का. And then the other three fingers symbolize the three jewels, the ratna, right? 3 jewels or gems of the Buddha, Dharma, and Sangha, because this is a Buddhist practice. So they're talking about the 3 jewels as the main place of refuge in our life. जो बाकी की 3 उंगलियां है, उनका प्रतीक है 3 रत्न, 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. Buddha was the teacher of the way, you know, Dharma. Way of life. The way of life, exactly. Thank you. And then Dharma is that way of life. And then Sangha are all the people who are walking that way of life, living that way of life with you. So बुद्धा हमारे टीचर यानी गुरु है, धर्मा इज वे ऑफ लाइफ, हमें आजीवन को कैसे जीना है, और संघ इज पीपल. Yeah. सब प्राणी. Rajani put in Buddham Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. Exactly. So this little mudra symbolizes all of that, those beautiful teachings. So basically मुद्रा को हाथ चक्र के वहां रखना है.
And then the right hand. Okay. And then the right hand is the supreme generosity. It's the easiest mudra. It's just open. Nothing special, really. I mean, maybe the thumb is a little bent a little bit, but you can imagine that on the palm of her hand, the right hand, is the Dharma chakra also. And that swirls rainbow light and blessings, like the ultimate gift, right? Protection, saving beings from samsara, emanating from the Dharma chakra in the palm of your hand. So this is there and it's resting on your knee, like that. जो right hand है, उनकी वो हथेली खुली हुई है. इसके ऊपर हम अष्टमुखी धर्म चक्र भी, उसकी भी विजुअलाइजेशन या कल्पना कर सकते हैं. ये अष्टमुखी धर्म चक्र से इंद्रधनुषी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है. और इस हाथ को इस तरह से अपने राइट नीज यानी राइट घुटने पे रखना है, हथेली ऊपर की तरफ, क्योंकि ये मुद्रा का प्रतीक है सर्वोच्च उदारता. And Tara is kind of, she has a little turn, she's leaning to one side a little bit. So you can feel her also like a dancer, like moving a little bit. Like, so as you say the mantra, you can even feel your body like seaweed in the ocean. Don't be stiff like a statue. Tara's not a statue. Yes. You know, feel the light. Maybe she's little like, because of wind element. Yes. Moving, she's swift because वो पवन तत्व से जुड़ी हुई है, so स्थिर नहीं है. Okay, I think, you know, and also you have the videos, you can go back and review. I've taught on this many times now, so it's there and you can use the videos to rewatch if you want to. So how does that sound? शेयर करेंगे ताकि आप ये वापस उनको रिपीट देख सकते हैं. I think we should go to next question. I mean next Devi. Yeah, next Devi question. हेलो, गुड मॉर्निंग. Good morning. मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे व्हाट्सएप में तो मेरा जुड़ा नहीं है, तो मुझे आप जैसे पीडीएफ भेजेंगे और या जो भी शेयर करेंगे उसको मैं कहाँ से कैसे करूँ, वो मैं पूछना चाह रही हूँ. ठीक है, आप अभी चैट कर दीजिए, आपका नंबर मैं नोट कर देती हूँ, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा. आपका कुछ सवाल है? हाँ नहीं मैम, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी सवाल है सब उसका जवाब मुझे मिल जा रहा है, तो मैं क्यों अपना समय वेस्ट करके बाकी लोगों को समय करूं. इसलिए थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. आई लव यू आप दोनों को. थैंक यू. We'll go to next Devi. She has understood almost all our questions, so we'll go to next Devi. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये यात्रा जो की है ना, तो थोड़ा सा बच्चों का सुबह काम भी था, बच्चे स्कूल जा रहे थे. मैं सिंगापुर से बोल रही हूँ, तो मेरा मतलब पूरा ढंग से नहीं हो पाया है, तो क्या वीडियो इसका मिल सकता है हिंदी में? यस, जो हमारा रिकॉर्डिंग हुआ है जी, उसके ऊपर हम काम करके आपको कुछ दिनों पे वही व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजा जाएगा. नवरात्रि में भेज दिया जाए तो नवरात्रि में हमको साधना करने को हो जाएगा. यस, हम ट्राई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजेंगे. Thank you, ma'am. Thank you. I wanted to share my experience that when we were actually switching seats with Goddess Tārā, I could literally experience her magical presence, and when she was leaving, I was literally crying. I don't know why. When we were told to look into her eyes, I couldn't stop my tears. I had to make a lot of effort, and finally she gave me a gift of some herbs. And like I just embedded the herbs into my heart, and it cured a lot of my ailment. And I felt that I was supposed to distribute these herbs to the world. I don't know what, I got some visualization like that and felt like sharing it with you. Thank you, ma'am. Thank you. It's a wonderful journey of 3 days. And I felt the presence of Tara also. And she took me to the nature, and beautiful flowers are there. I really enjoyed very much. And I want to tell you that in every month, if you will be with us for once in a month, it will be great. We will be grateful for it to you.
We At can least talk about that. I would love that. I would love that. Thank you. once in a month, then we can matlab practice it easily now. That's right. I'll talk to Sweety and Anandaji about it. No question, all solved. Thank you very much. Everything's perfect. Thank you, Manju. Morning, ma'am. Morning. I felt very calm and relaxed, and my experience was very beautiful. Ma Tara gave me a drop of water. As I took in my mouth, it centered in my heart. Before you said, it was centered in my heart. And I felt so calm and relaxed. She told me that don't worry, soon everything will be right. Wonderful. Beautiful. Just I want to share the experience, no questions. Thank you so much. Thank you, Mona. Beautiful. I love the sharing too. Thank you. Thank you. Namaste, ma'am. Namaste. Hello. Yes. Ma'am, number one, I'm not able to visualize anything. So that's not a question. I'm telling you, मैं अपने मन की बात आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं जो सुन रही हूँ तो so I'm not able to visualize anything. That's one thing. I'm glad you brought that up. It's not easy for some people. It's actually, I've had these questions before, and that's okay. Remember, I don't know if you were here the first day, but I said that there's the mother tantras and the father tantras, and this practice is definitely more from the mother tantra tradition, where feeling the practice is more important than seeing the practice. So for you, I don't know what the sound is happening, what's going on with the sound, but focus more on the feeling of the light in your body, or the feeling of the mantra vibrating in your body, or how it feels to be in the position or mudra of Tārā. Focus more on the feeling, okay? Don't worry about not seeing her. Sometimes I don't see her, I feel her. It's okay. उनका ये प्रश्न था कि उन्होंने आज ये साधना प्रैक्टिस करते समय या जर्नी करते समय विजुअलाइजेशन नहीं, तो it's okay, continue with the practice. Okay, one more question. Yes. Hello. I think maybe everybody just should do one question because we have only more one people. question. So I'm sorry. Yes, you can ask your question, please. Yes, मैम ये पूछना था कि जो डेली प्रैक्टिस हम करेंगे तो उसको अगर हम मंत्र चैंटिंग नहीं करते हैं तो केवल ब्रीदिंग के साथ ध्यान में जाना है या और कोई प्रोसेस है, कैसे करना है? The question is, if we do not wish to chant the mantras, and only if we do the practice, the breathing practice and the journey, is that okay? Yes, absolutely. Absolutely. Yes, निशा जी वैसा कर सकते हैं. अगर आप मंत्र चैंट नहीं करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, एज पर आपकी इच्छा के हिसाब से. जी. अच्छा, केवल ब्रीदिंग करके और फिर डायरेक्ट ध्यान में चले जाना है. Yes, साधना कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Hi, good morning, ma'am. Good morning to both of you. It was wonderful journey. Yeah, it was wonderful journey. Thank you so much for being with us, ma'am. I want to share my experience. As I missed my first session, although, but you know, ये 2 दिन का जो session था, it was wonderful for me. And जब मैं कल मैम जर्नी कर रही थी तो मतलब मुझे माँ तारा एक पहले तो ऐसे ही एक रफ सा प्लेस था, लाइक एक स्टोनी सा टूटा हुआ सा हाउस था, सीढ़ियां थी, और उसके बाद एक खुला सा मैदान था और जहाँ पे गोल्डन कलर का खूब बड़ा सा महल टाइप का था और वो आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे जा रही थी और खूब बड़ा सा खूब बड़ा सा सिंहासन था और जो आप धर्म चक्र था ना, धर्म चक्र का जो इमेज थी ना, बिल्कुल वो उस पे
उकेरी गई थी, मतलब वो इमेज थी उस पे, लाइक गोल्डन उससे वर्क था, और वो वहां पे बैठ गई। और उन्होंने एक साइड में छोटा सा वैसा ही सिंहासन था, उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं वहां पे साइड में बैठ गई। और थोड़ी देर बाद वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत वैसे ही लाइक देवी आई 3-4, और उनसे कुछ उन्होंने बात की, कुछ कहा, मैं इतना समझ नहीं पाई। फिर उसके बाद वो बो डाउन हुई, लाइक मैं ऐसे बैठी हूँ, वो अपने सिंहासन से उतर के ऐसे अपने पैरों पे बैठ के, उन्होंने मुझे ऐसे करके ना, जैसे लक्ष्मी माँ ऐसे करके दोनों हाथों से ना, उन्होंने मुझे ग्रीन सा जेम दिया, लाइक पूरी मेरी अंजलि भरी हुई थी, उन्होंने ऐसे करके दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, महल से बाहर ले गई, और मुझे ऐसे राउंड राउंड करके घुमाने लगी। और मैं अपने फेस में नहीं थी, जैसे मैंने महल में एंटर किया और बैठी ना, तो मैं उन्हीं का एक छोटा रूप हो गई। लाइक वो तो बड़ी थी, लंबी उम्बी, और मेरी जो हाइट अभी है जैसे वैसे ही थी। और उन्होंने जब वो बाहर वापस लेके आई, तो ऐसे राउंड राउंड एक बगीचे में लेके आई, लेक थी वहां पे, और ग्रीन कलर का व्हाइट कलर का फ्लावर था, खूब ग्रीनरी थी। और उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ के राउंड राउंड घुमाया। और उसके बाद वो जो इंद्रधनुष वाली लाइट थी ना, उसमें मर्ज करते हुए हम ऐसे ऐसे राउंड राउंड करते हुए और ऊपर चले गए। और आज का जो एक्सपीरियंस था वो ये कि आज माँ ने मुझे एक वो दिया, मतलब क्रिस्टल लाइक कोई जेम था, मैं पहचान नहीं पाई, इतना सारा, इतने बड़े बड़े, और जैसे कि जैसे वाटर नहीं होता है उस कलर में था। जब आपने कहा कि माँ से कुछ मांगो, माँ आपको कुछ दे रही हैं, तो उन्होंने मुझे वही दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि Thank you for having such a wonderful experience. Thank you. I have a question also. Yes, you may ask a question. Like अगर मैं, जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, और हम क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूजा करते हैं उस दौरान, तो क्या हम इसे चैंट कर सकते हैं, लाइक जो मंत्र अभी माँ देवी ने बताया, वो मंत्र हम क्या चैंट कर सकते हैं, लाइक दिया जला के और ऐसे करके कूल एक शांत प्लेस, क्वाइट प्लेस, जहां हम मंदिर में पूजा करते हैं अपने? Yes. Her question is, since we are having 9 days of festivals of goddesses, so can these mantras and chants be recited in front of the goddesses with the diya can be lit? Yes, I think she's also having some. आप देख रहे हो उनको, देवी टीचर चंद्रा ईस्टन को, उनके पीछे भी 2 दियाज है, कैंडल लिट किया हुआ है। जी, I can see that. Yes. So question is whether the chants and the mantras can be recited. Ji. First of all, is that your kid there? Yes. I want to see. Yes, you can. Yes. You know, they say Tara is Kali sometimes, or Durga, very commonly associated with Durga. And you have the blue-black Tara, the dark Tara, like Kali and Durga at times. So in the 9 nights of the goddess, you could chant her whenever you felt appropriate. This Tara is peaceful and green, but some of the other Taras are wrathful, fierce goddesses with dark colors, you know, dark red or dark blue. But bring her into this. I think that the goddesses are universal, aren't they? And they're all connected. Thank you. उन्होंने उत्तर दिया है, जो ग्रीन तारा है वो शांतिपूर्ण तारा है, और ऐसे 21 फॉर्म्स है तारा की। तो आप ये जो आपका जो प्रश्न है, आप चैंट कर सकते हो मंत्र को। जी, thank you. Yep, thank you. So I'm sorry, but I have to go because I have my little Ganesha, my little son. I call him my Ganesha. I have to go pick him up at basketball practice pretty soon. So I have maybe 5 more minutes and then I have to go. So how do we want to use the time? We have 1, 2, 3, 4 patient, very important people who've raised their hands. Could we do really quick, make your question really concise, and I'll make my answer really concise. Oh my God, we just got a new question. But I also wanted to chant with you. So, Sweety, what do we do now? Okay, I'll ask them. अपने questions को please short और crisp रखिए.
या तो हम क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, हाँ 5 मिनट्स में, फिर हमको चैंट भी करना है, सो एकदम शॉर्ट रखिए. यस प्लीज. आई थिंक वी हैव अनम्यूटेड समबडी. यस प्लीज अपना क्वेश्चंस पूछिए. हाय, गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Please ask your questions quickly. I don't have any question. I just wanted to say thank you. We both, I'm a daughter and she's my mom. We're doing Oh, this. you look like sisters. Yes. And we both enjoyed a lot. Thank you. We feel divine. We feel divine. You are we are Tara. connected to Tara Ma from 1 year. We listen her mantras. And we don't know what it means and why we are listening, but it gives peace to us. Thank you very much. Thank you. Yes. Yeah, thank you so much. It was a great experience. I just wanted to share my experience. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes. So yesterday's and today's journey, I'll just make it very quick. So yesterday I met Goddess Tārā in a beautiful forest with a waterfall behind, and then she held my hand and took me to the castle, stating that it is yours, and you have a lot many things to do in life. And I asked few questions related to my personal life. And yesterday she gifted me the hexagonal, like this big hexagonal emerald and a heart-shaped ruby, this big. And this was the symbol of love, kindness, and a healing power. She said, you have these in you, utilize, and you are already into this sync. So you will get through it. You give time. You have, but you will get a chance to, heal and portray the kindness and everything. And today I saw her over the beautiful beach, and she was making me practice with some dance movements, and there were like mountains around covered with snow. Suddenly then after that she takes me in the air, and then we are in a royal train where I was offered a beautiful custards, and they're all sweet delicacies, which I really like. And when we got down off the train, it was a beautiful landscape, big landscape. I could feel the grass, and there was a way, a pathway. Again, this is a bit modern palace, not like the old age castles, but this was a palace. And then she told me that this is your place. No matter where you take birth on earth, or no matter which dimension you live in, whatever actions you take, this place gets nourished. I saw blue flowers around, and she said, this is yours and you are my daughter. Like she kissed my forehead, and she said, you are my daughter, and no worries about the personal questions. She answered me in a certain way. I asked her, she answered them. And today she gifted me a lotus and a jewelry, the anklet, and the bangles and the waist thing. That this is all jewelry she gifted me, but the lotus is exactly like the one you showed in the image, which she has. She has in here. Thank you for sharing. Thank you. So beautiful it was. Beautiful, beautiful. You should write that down or draw it. Thank you. Yes, you should ma'am. write it. Thank you. I'm so grateful to you. For chant. Yeah, thank you. I'm sorry for the people who have their hands raised, but I have to respect all of your time. You have your day to start. And so I chatted that I think we need to chant for just a couple minutes, and then I need to let you go on your day, and I need to go, but I would love to see you again. So let's talk about another practice time, and then we can do more questions then. And Sweety, if any questions come up, Sweety can always chat me and I can try to answer. आप आपके जो प्रश्न है आप WhatsApp ग्रुप पे डाल दीजिए. अभी हम मंत्र चैट करेंगे क्योंकि समय भी कम है. ठीक है? Okay, this is our mantra that we did. Om Tare Tu Tare Ture Dana Traya Svaha, with a beautiful melody composed by my dear friend, my Indian Dharma sister, Nina Rao. And so it has 2 parts. So we'll do the first part for maybe 4 rounds, and then we'll do the high part for 4 rounds. And then we'll spend some time, just a few minutes. So join me when you feel ready. Everybody will be on mute because it sounds funny when
the internet doesn't work very well. So please sing with me and open your hearts to Tārā. Okay. Om Tare Tu Re Dana Traya Svaha. 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 Next part. Om Tare Tu Re Dana Traya Svaha. Everyone. Om Tare Tu Re Dana Traya Svaha. 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 Last time. Om Tare Tu Re Dana Traya Svaha. Om Tare Tu Re Dana Traya Svaha. May Ma Tārā bless you, walk with you, and may we all be in the mandala of Mother Tārā always together. I hope to see you all again. Please unmute yourself and say goodbye. I can hear you. Goodbye. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. back. Thank you. Good night. Thank you.